अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, श्रीकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो यार आज मैं 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ट्रैवल वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, 13-13.5 मिनट की है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना मेरे साथ। तो और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इंडिया की जो 10 बेस्ट प्लेसेस विजिट करने के लिए हैं वो कौन कौन से हैं। तो फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। Presents 10 best places to visit in India. India is an enormous and diverse destination, bordered by 7 different countries, not to mention the Arabian Sea and the Bay of Bengal, means that there are many different sides to the country. More than 20 official languages, multiple religions, and a variety of cuisines exist within India's borders. To truly experience the breadth of Indian culture and history, travel is key. Here's a look at the best places to visit in India. Let's see. कितना क्यूट है यार। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी एनिमल। Number 10, Udaipur. The city of lakes, Udaipur glistens romantically on the edge of the desert in Rajasthan. The city is protected by lush hills and is where you can find the mesmerizing Lake Palace in the middle of a tranquil lake. Another captivating sight is the imposing but graceful city palace, along with the Monsoon Palace, which stands out with walls made of gleaming white marble. Explore old temples, walk the winding streets of this fanciful corner of India, and slip into times past inside its ancient bazaars. मुझे तो इंडिया में जो पैलेस है ना, पैलेस वगैरह जो है पुराने पुराने, उनको विजिट करने का दिल करता है। फोर्ट्स हो गए, पैलेस हो गए, और मेनली मुझे ताजमहल एक बार देखना है। डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है यार इनके टेम्पल्स की ना। Number 9, Amritsar. The Punjabi city of Amritsar lies on the border with Pakistan and is home to the holiest of Sikh sites. The Golden Temple is in the heart of the old walled city. This serene Sikh shrine provides a place for reflection and inspiration. You can tour the Golden Temple regardless of religion, but you will need to show respect by covering your head and removing your shoes. The streets surrounding the temple are a frenetic fusion of people, markets, and activity. Be sure to pick up some traditional goods, such as hand-embroidered fabrics and delicately ornate shoes. मेरे जो ग्रैंडफादर से वो इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन से पहले इंडिया इसी जगह पे रहते थे, कहीं पंजाब में, अमृतसर में या कहाँ पे, आई डोंट नो, लेकिन वो पंजाब से ही बिलोंग करते थे। तो इस लिहाज से मुझे पंजाब जो है, अमृतसर और ये लुधियाना और ये जो जगहें हैं वो मुझे विजिट करने का एक बार ख्वाहिश है जिंदगी में। Number 8, Ladakh. In northernmost India, in the heavily disputed Kashmir region, is the mountainous destination of Ladakh. This region is large, but it has a low population density and a number of nomadic residents. Breathtaking, pristine scenery is a major draw to the area, but virtually all travelers will also spend time in the town of Leh.
The town is located at a very high elevation, and it is home to the 17th century palace of the King of Ladakh. Buddhist culture is also prominent in Leh, and you may wish to explore some of the many Buddhist monasteries and temples. Number 7. Goa beaches. On the western coast of India is Goa, a former colony of Portugal that blends Indian culture with colonial influences and plenty of international tourism. Goa is popular largely because of its spectacular beaches. The busiest of all is Candolim Beach, where travelers from around the world flock to soak up the sun. Anjuta Beach, by contrast, is far less crowded. It is also an amazing place where you can walk to Chapora Fort and admire the sandy coastline from a new perspective. Palolem is considered one of the most beautiful beaches in all of Goa, with its natural bay surrounded by lofty headlands on either side. एक बार ये भी विजिट करने जाऊंगा क्योंकि इंडियन ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखता हूँ तो वो विजिट करते हैं इन जगहों पे जाके तो यार बहुत अच्छी लगती है ये जगह मुझे। Number 6. Delhi. If you're spending any time in northern India, you will almost certainly visit the capital city of Delhi. The enormous, sprawling destination is home to several districts, and it is considered to be one of the oldest cities in the world. One of the top sites in Delhi is the Red Fort, which was built in the 17th century. The Red Fort is made from sandstone, and you will be able to walk through its Lahore Gate, into the bazaar, through the Jewel Palace, and even into the former residence of the Sultan. While in Delhi, you should also make time for the many museums and religious structures that make up the city. Gate number 1, Bab Abdullah. लुक बड़ी प्यारी है। ये टेंपल है, ये क्या है? ये मुगलों ने जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे वैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। कौन सी जगह है? Number 5. Ellora and Ajanta Caves. In the state of Maharashtra, you can explore the caves of both Ellora and Ajanta. At Ellora, there is an enormous complex of shrines carved from the rocky landscape. These 34 cave shrines are up to 1,500 years old, and they are from 3 distinct religions: Buddhism, Jainism, and Hinduism. 2 hours away is Ajanta, which is home to 29 caves. The Ajanta caves are covered in murals and paintings, most of which reflect Buddhist stories. While the 2 cave complexes are 2 hours away from one another, it is well worth visiting both to compare these incredible attractions. Number 4. Varanasi. A city that may seem strange to many Westerners, Varanasi is of great religious importance. The holy city sits on the banks of the divine Ganges and is believed by Hindus to be a sacred place of pilgrimage. The city is known for the religious practices that take place on the Ghats alongside the river. Pilgrims wash themselves in the waters of the Ganges, and the bodies of Hindus are cremated. The sights of life and death along the riverside can be shocking, but a visit to Varanasi is also contemplative and ultimately helps visitors to further understand India's deep cultural and spiritual practices. लेकिन ये जो सपेरे होते हैं ना जो सांप पकड़ते हैं ये असल में जो कोबरा का जो शो दिखाते हैं नाग का वो एक्चुअल में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है कि
क्योंकि कोबरा तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस वेनमस स्नेक है, दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 इतने पे आता है, टॉप पे। तो इसके जो टीथ्स होते हैं जिससे ये अपना पॉइजन छोड़ता है, इंजेक्ट करता है किसी की भी बॉडी में, वो तोड़ देते हैं। लेकिन काफी जो है वो ऐसा नहीं करते, वो एक्चुअल जो पूरा का पूरा स्नेक होता है, लाइक टीथ भी ब्रेक नहीं करते होंगे, वो ऐसे ही शो दिखाते हैं। तो वो Number 3. Kerala. The southwestern state of India, known as Kerala, is a place of tropical beauty. Palm trees, white sand beaches, and ecotourism are all big reasons to explore the region. Besides its famous backwaters, elegant houseboats, and temple festivals, Kerala is also home to the Tekadi Tiger Preserve. The hub of Kerala is the city of Kochi, where you can see the local fishing industry thriving, along with modern high-rises and colonial architecture. इनकी जो बोर्ड्स होती है ना डेकोरेट की हुई, और इनके जो खाने होते हैं जैसे इडली, डोसा, सांबर। डोसा तो मैंने खैर टेस्ट किया हुआ है, वो इतना खास मुझे नहीं लगा क्योंकि टेस्ट नहीं है ना वो हमारा, इसी वजह से। लेकिन आई वांट टू ट्राई इडली वंस, एंड सांबर जो है वो एक बार ट्राई करना चाहता हूँ मैं। और वैसे केरला जो है वो भी बहुत प्यारा है, हिली एरिया जैसा ही है। Number 2. Agra. Agra is known for one thing, the iconic and ultimately impressive Taj Mahal. Set on the south bank of the Yamuna River, the Taj draws millions of tourists a year. Built by an emperor as an extravagant memorial to his wife, the mausoleum's porcelain white marble is an emblem of romance and adventure. Agra itself sits in the shadows of its imposing monument, but is a small and welcoming city. The ancient Mughal-era Agra Fort is an attractive spot to visit. Peer over the walls and catch your first hypnotizing glimpse of the Taj. जो खूबसूरती से इसे बनाया गया ना यार, दिल करता है कि बस जाके खरीद लूं। ये कुछ अरबिक में लिखा हुआ है, तो अपना फेस पूरा ऐसा करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये ताजमहल के अंदर का हिस्सा है जहाँ पे आई गेस कब्र है। शाहजहां की और मुमताज की। लेकिन इसका स्ट्रक्चर यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो एक जो क्लैरिटी है उनके कार्विंग्स में, जो मार्बल में उन्होंने कार्विंग्स की हुई हैं, वो झलकती हैं कि क्या ही उनके पास टैलेंट था उन लोगों के पास जिन्होंने ये इसे बनाया है। Number 1. Jaipur. The pink city of Jaipur is the capital of Rajasthan and is where you can find the beautiful Amber Fort, a sprawling, stunning complex set in the hillside overlooking a lake. Located just outside of the city and built in 1592, the grandiose citadel was also a palace for some time, but is now an impressive tourist attraction. Make sure to take a trip to the opulent city palace with its stunning courtyards and gardens, plus the amazingly intricate Palace of Winds. Jaipur forms one corner of the Golden Triangle, and it also makes a great gateway into the lesser-known destinations within Rajasthan. जयपुर राजस्थान में ही जो ब्लॉगर हैं बहुत ही फेमस हैं, सूरज पाल सिंह एंड यशीकांत, ये भी उधर से बिलोंग करते हैं। इनके मैं ब्लॉग्स देखते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ के भी जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, अच्छे लोग हैं। जी तो गाइज ये था 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ट्रैवल वीडियो। तो यार हम लोगों ने देखी 10 जगहें जो इंडिया की टॉप बेस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र का भी काफ़ी जगहें थी, आगरा फोर्ट था, जयपुर था, केरला, लेह लद्दाख एंड दिल्ली था उसमें, और भी काफ़ी सारी जो फेमस जगह हैं जैसे गोवा बीचेस हो गए,
एंड अमृतसर के बारे में कुछ बताया गया। तो यार बहुत बहुत प्यारी वीडियो थी, मज़ा आया। ऐसा लगा कि इंडिया घूम लिया मैंने, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल की ख्वाहिश है कि एक बार मैं इंडिया जाऊं, जो इसमें जगह जैसे दिखाई, अमृतसर हो गया पंजाब, मुझे वो विजिट करना है। जैसा मैंने वीडियो के दौरान भी बोला था कि मेरे जो ग्रैंडफादर से इंडिया और पाकिस्तान की जब सेपरेशन हुई, उससे पहले वो वहीं से बिलोंग करते थे, वहीं पे उनका घर बार था, और वो छोड़ के इन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में भी वो पंजाब में थे, मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ मेनली तो, लेकिन कराची में भी पला बड़ा हूँ। तो खैर हाँ, तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे रिएक्शंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। एंड कमेंट में ये भी मेंशन करना कि आप आगे किस किस कंटेंट पर रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।